thought that instead of calling it a celebration of 100th year, we shall take a resolve to do our work more meticulously, more qualitatively, and reach out to the society, rendering service and making Swayam Sevaks feel that we are part and parcel of this society. We are not away from the society. So that is why in our parlance we say we are a component of society. Ghatak, हिंदी में इसको घटक कहते हैं. तो इसलिए इस प्रतिनिधि सभा में हमने एक संकल्प पत्र को पारित किया है. We have adopted a resolve. One resolution has already been passed about the situation in Bangladesh, which has already been shared with you, with media. And I hope the discussion has already taken place yesterday. And on the occasion of the centenary year, the resolve or the sankalp जो मैंने कहा, उसको भी आपके पास प्रति देने वाले हैं. Given? तो इसलिए इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संघ के कार्य जो 100 साल से चल रहा है, जैसे हमारे स्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था, हम कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं कर रहे हैं. प्राचीन काल से भारत में समाज के संगठन को और व्यक्ति के निर्माण करते हुए व्यक्ति चारित्र को बढ़ाने का कार्य हर युग में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई किए हैं. सैकड़ों हजारों वर्षों से किए हुए इस कार्य के ही अगले चरण के नाते एज द कंटिन्यूड phase of the same work, the same mission, the RSS has also played its role. That is how we see our work. So that rededication resolve has already been accepted by the Pratinidhi Sabha and the copies of which has been given to you. And from the next Vijay Dashmi day, we will be having some focused activities in the form of organizing conferences, etc. I am going to give the brief account of the same. The first program will be on the occasion of Vijay Dashmi day, which falls on 2nd October. Every year on this day, the Swayam Sevaks in uniform, Sangha uniform, they assemble for observing Vijay Dashmi Utsav all over the country. And this year, because there has been expansion to many new places, nearly 1 lakh places. So we are planning to have programs in each mandal or a basti comprising of 10,000 population, as I said. In big urban areas like Bangalore or Hyderabad or Mumbai, it can be number of programs may be less because comprising the thing. However, we are planning to have Vijay Dashmi Utsav launching the centenary year programs. And as it has been customary, on that day, Sarasanga Chalakji will address Swayam Sevaks and the general public in Nagpur, which takes place every year. And all over the country also we will have that program. The second one is, we have thought of outreach, that is Vyapak Graha Gram Basti Sampark. So we want to reach maximum number of villages and bastis, and also maximum number of families or households. That will be planned in the month of July, August in each prant, in each state. The probable period of this will be November, December, January next year, when we will be having our
outreach program reaching out to crores of households and lakhs of villages and towns. And where our Karyakarta Swayamsevaks will be communicating the idea of Sangha Vichar, the philosophy of Rashtriya Swayamsevak Sangh, and also its activities, and requesting people to join this movement and also to join the various socially useful activities in their own localities, in their own villages. So we are going to distribute literature addressing these things in that campaign. So that is one is mass contact campaign, Vyapak Samparka Abhiyan. Generally we have planned it for 3 weeks in each state. The Prant can identify its period during the month of November, December, January, according to the local convenience. Then we are having another third program is Samaj Sammelan. Hindu Sammelan will be conducted at Mandal Basti level. The small committees formed by the involvement of the general public, prominent personalities at that level, maybe block level, maybe town level. So they will organize this Sammelan, where the message of having, as society, we should be a confident, strong, united society, a harmonious society, without any discrimination on the basis of birth or gender. Secondly, each individual and family should contribute something to for the welfare and benefit of our nation, for the welfare of society. And we have thought of Panch Parivartan. And in that Sammelan, the speakers will exhort the members who will be attending the conference to practice and follow these Panch Parivartana aspects in their personal, family and professional life. So to reach these messages to a mass level, these Sammelans will be conducted. As I have already said, it is also to galvanize the strength of Hindu society, so that a society should feel confident, society should feel united and harmonious in their daily life. The fourth program that we have thought of is Sadbhav Baitak, that is Goodwill. In our society, many a time, some differences which arise. But because of efforts of many social reformers in the past and many great leaders in the society, because of the efforts of Rashtriya Swayamsevak Sangh Karyakartas also, we have been able to achieve that the cohesion and unity of the society, although there may be various groups socially, so we should live together. There may be Pantha Sampradaya, caste and communities. So all those things are Hindu Samaj realities. But as a society, we should be one. So this Samajik Sadbhav Baitak will emphasize on that, and also how we can have reformation according to times in our own societies, in our own small units and components of our society. Because a society, a living society, should accept the newer things of life without losing its cultural roots. And that has been the beauty of Hindu society. We have seen in Kumbh Mela, which was recently concluded at Prayagraj,
that the vast multitude of this country, crores and crores of people, they throng to have a dip in Trimeni Sangam. Our cultural units, cultural roots are so strong, but those who had come there, they have accepted many of the modern life's developments. So they can go together. So this in our Goodwill meetings at block level, Samaj Sadbhav Baitak, we want to see that these things are pointed out so that our people can have the rich culturally, philosophically, spiritually, well-founded life, accepting the modern life's realities. So without losing cultural foundations. And also to live harmoniously. And also to see that the younger generation is free from any addictions or gender equality can be emphasized. Cleanliness in the localities, communities, villages, wards, urban areas. So like this, there are many things that a organized community can achieve. So we want to see that these things are taken up as a society. So these Goodwill Mission meetings, Samajik Sadbhav Baitak, will try to achieve that. And another program that we have thought of is, at all district levels, we want to have the meeting of intelligentsia, Pramukha Jana Goshti, to discuss the national issues and the one nation, one culture, and our nation's national integrity, how Sangh's Hindutva philosophy has found support in all these years. And as I have told in the past also, and Sangha Karyakartas have been giving this message to larger society, Vimarsh ko badalna hai. The narrative that is set many a time has been distorted one. इसलिए इस विमर्श को बदलने के लिए और सत्य को सही सत्य को स्थापित करने के लिए जिला केंद्रों पर प्रमुख जनगोष्ठी के द्वारा हम ऐसे समाजोपयोगी राष्ट्रोपयोगी विषयों को अपने देश के वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर करेंगे. So this is another program which we will be having at all district centers. And then we are going to have within a Sarsanga Chalak this interaction with the intelligence of the society in 4 major cities, Delhi, Bangalore, Mumbai and Kolkata, so that to set the trend of, as I said, the narratives, Sarsanga Chalak will be addressing. That is in 2026 second part. And we are going to have in more than lakh places 1 week shaka, because many newer areas where we reach, there the continuity should be ensured. Because in new places, new karyakartas, they have to be trained to have daily shakas. उसके लिए हम उस प्रयत्न को करने के लिए एक व्यापक शाखा के कार्यक्रम सितंबर 25 से अक्टूबर 10 के बीच में करने वाले हैं. And we have asked all prants, various provinces of Sangha, to take up some program for the youth, age group 15-30, college students and non-student youth as well. For them, it may be Panch Parivartan, it can be narrative setting, it may be patriotic activities, seva activities. So they should be ready to pay back for the society
and the new generation of our society should emerge to make Bharat great and prosperous. So prepare the youth, and that's why each province will check out some program for the youth of the age group 15-30. So these are the activities that we have thought of. So I think I have given three important. One is Rani Abbaka, second is the resolve that we have asked, and the third is the programs that we have decided for the centenary year. So this will be our next year's preparation. So now I request you to ask if there is anything. And in the beginning also I'll tell, you have been very cooperative, and every time the media has been giving enough publicity, and many a time because of media, the RSS is in the center of discussion. So I think your contribution in making RSS better known is always welcome. Thank you. जी दत्ता जी, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है, मैं टाइम्स नाउ भारत दिल्ली से हूँ। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो औरंगजेब हो या मुस्लिम शासक हों, उनकी कब्र को हटाने के लिए कई हिंदू संगठन जो हैं वो आगे आ रहे हैं, और इस पर आपका क्या कहना है? और वक्फ बिल को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या सोचता है, ये भी हम जानना चाहते हैं। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, वो क्या लेके आएंगे देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ, irrespective of their party affiliations, their ideological persuasions, they came forward and they said वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था। आपके मीडिया के लोगों को तो अच्छा मालूम भी है। तो ऐसे कई, यहाँ विंडसर मैनर होटल को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे हुआ है। तो वक्फ के बारे में सरकार ने एक बिल को जॉइंट इसमें किया है। वो जो हुआ है अभी तक का, वो सही दिशा में चला है। सरकार कैसे करती है, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। और औरंगजेब के बारे में तो हुई है। देखिए, समाज में कोई भी किसी विषय के बारे में उठा सकते हैं, संघ का कहना नहीं है। इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। औरंगजेब के बारे में, दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया। तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिको को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिको को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा सिको उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। तो इट इज फॉर ए फ्री कंट्री टू डिसाइड व्हाई वी बिकेम फ्रीडम। और फ्रीडम फाइटिंग क्या अंग्रेजों के खिलाफ किया तो स्वतंत्रता आंदोलन है। उनके पहले जो आक्रांत थे उनके विरुद्ध के, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। राणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। तो इसलिए हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। तो किसके साथ अपने देश के इतिहास को जोड़ना है, वो होना चाहिए। विदेशी स्वदेशी के नहीं है, रिलीजन की बात नहीं है। निवेदिता यहाँ आती है, इस यहाँ वो क्रिश्चियन भी होंगी, यहाँ के इतिहास के साथ जुड़ गई। दारा सिको के बाद मैंने कहा, तो ये अपने को सोचना चाहिए। दिस इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फर्म व्यू, which is the view of this land. दत्ता जी नमस्ते। प्रमोद अंता
ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂತ TV9 ಇಂದ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಕೂಡ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ನಿಲುವೇನು? ಹಾಗೇನೆ ಈ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇನೆ ನಾನು ಸಂಘ 16 ಸರಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪದೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ 4% ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಘದಿಂದ ಪದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್ ಆಧಾರಿತ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು सुशील कुमार शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया. इलेक्शन के पहले सबने अनाउंस किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया. सो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट पॉसिबल. बैकवर्ड क्लास विद इन दैट रिलीजन इट इज देयर. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर है बैकवर्ड कम्युनिटीज विद इन. सी दैट इज वाई रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. Anybody who thinks of this, they are going against the wishes of the founding fathers of the constitution. होस्ट वाले साहब, मेरा नाम राघवेंद्र राव है, मैं BBC न्यूज़ दिल्ली से हूं. पिछले करीब 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. अब संघ भारतीय जनता पार्टी का अभिभावक है. उस हैसियत से मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के प्रदर्शन को आप कैसे आंकते हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है? दूसरा ऑकेशन हम करेंगे. नहीं, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है? इलेक्शन के समय आकलन देश के लोगों ने किया है. संघ देश से अलग नहीं है. और अभिभावकत्व तो हम किसी भी सरकार का आते तो हम अभिभावकत्व देने के लिए तैयार है. केवल भाजपा के लिए अभिभावकत्व देना इसे हमारा नहीं है. तैयार है. केवल भाजपा के लिए अभिभावकत्व देना इसे हमारा नहीं है. हम अभिभावकत्व कोई भी पार्टी आकर होंगे तो हमारे विचार बैठता है तो हम अभिभावकत्व किसी को देंगे. देते नहीं, आते नहीं, वो अलग बात है. मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके मुताबिक वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें